अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी जामिया और आप देख रहे हैं जम्बू क्रिएशन। दिस रिवीजन इज़ बेस्ड ऑन ऑडियो बुक। और ऑडियो बुक देखने से पहले सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि आप समझ लें कि ऑडियो बुक क्या है। ऑडियो बुक एक ऐसा बुक फॉर्म है जो आपको रिटन फॉर्म में नहीं बल्कि लिसनिंग फॉर्म में मिलता है। वो आप लिसन करके रिवाइज़ करते हो बार बार। इससे आपकी हेल्प ये हो जाती है कि हर वक्त आपको बुक्स लेके घूमने की ज़रूरत नहीं। जब आप ट्रैवल कर रहे हो, जब आप कहीं जा रहे हो या फिर सो रहे हो या फिर अलार्म के वास्ते, ऐसे कई तरीके से यूज़ करके आप इसको बार बार सुन के आप इसको लर्न कर सकते हैं। और जितने बार आप पढ़ते हो उतने बार आपको बुक खोलना पड़ता है। इसे बार बार बुक बिना खोले ही आप अपना लर्न कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 1, विच इंक्लूड द यूनियन and its territory. Article 1, name and territory of union. Article 2, admission or establishment of new states. Article 2A, which is repealed. Article 3, formation of new states and alteration of areas, boundaries or names of existing states. Article 4, laws made under Articles 2 and 3 to provide for the amendment of the first and the fourth schedule and supplemental, incidental and consequential matters. These 4 laws was from part 1. Now I am reading part 2, which is based on citizenship. It starts from Article 5. Article 5, citizenship at the commencement of the Constitution. Article 6, rights of citizenship of certain provisions who have migrated to India from Pakistan. Article 7, rights of citizenship of certain migrants to Pakistan. Article 8, rights of citizenship of certain persons of Indian origin residing outside India. Article 9, persons voluntarily acquiring citizenship of a foreign state not to be citizens. Article 10, continuance of the rights of citizenship. Article 11, Parliament to regulate the right of citizenship by law. इसमें सिर्फ हमने हेडिंग आर्टिकल्स जो है वो यूज़ किए हैं ताकि आप इससे अपना रिवीजन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको डिटेल में चाहिए इसके वीडियो में आगे दूसरे वीडियो में मिल जाएगी आपको। अगर आपको हमारी वीडियो बहुत ही ज़्यादा फास्ट लग रही है तो आप यूट्यूब की सेटिंग से इसे स्लो कर सकते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा स्लो लग रही है तो आप इसको फास्ट भी कर सकते हैं। और आप अपने कमेंट में ये बता सकते हैं कि आपको ये कितना फास्ट या स्लो में चाहिए। इससे आपको सेकेंड टाइम और ज़्यादा बेटर वाली वीडियो मिलेगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डेफिनेशंस एंड उसके एक्सप्लेनेशन के साथ रिवाइज़ करेंगे, बट इट इज़ अ ऑडियो बुक सो द हेडिंग ओनली। पार्ट 3, विच इज़ बेस्ड ऑन फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 12, डेफिनेशन। आर्टिकल 13, लॉज इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। अब हम पढ़ने वाले हैं राइट टू इक्वालिटी, विच इंक्लूड फ्रॉम आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18। इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14। आर्टिकल 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17, abolition of untouchability. Article 18, abolition of titles. अब हम पढ़ने वाले हैं right to freedom, which include from Article 19 to Article 22. Article 19, protection of certain rights regarding freedom of speech, etc. Article 20, protection in respect of conviction for offences. Article 21, protection of life and personal liberty. Article 21A, right to education. Article 22, protection against arrest and detention in certain cases.
right against exploitation, which start from Article 23. Article 23. Prohibition of traffic in human beings and forced labor. Article 24. Prohibition of employment of children in factories, etc. Article 25. Freedom of conscience and free possession, profession, practice and propagation of religion. Article 26. Freedom to manage religious affairs. Article 27. Freedom as to payment of taxes for promotion of any particular religion. Article 28. Freedom as to attendance at religious instruction of religious worship in certain educational institution. अब हम पढ़ने वाले हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो कि आर्टिकल 29 से 31 तक है. आर्टिकल 29. प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़. आर्टिकल 30. राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर educational institution. Article 31 is repealed, but that have 4 sections. Article 31A, Article 31B, Article 31C and Article 31, which is based on saving of certain laws. Article 31A, saving of laws providing for acquisition of states, etc. Article 31B, validation of certain acts and regulation. Article 31C, saving of laws giving effect to certain directive principles. अब हम पढ़ने वाले हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. आर्टिकल 32. रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स conferred by this part. Article 32A was repealed. Article 33. Power of Parliament to modify the rights conferred by this part in their application to forces, etc. Article 34. Restriction on rights conferred by this part while material law is in force in any area. Article 35. Legislation to give effect to the provision of this part. यहाँ हमारा पार्ट 3 ऑफ फंडामेंटल राइट्स ख़त्म होती है. अब यहाँ से शुरू होता है पार्ट 4 ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी फ्रॉम आर्टिकल 36. Article 36 is based on definition of directive principle. Article 37. Application of the principles contained in this part. Article 38. State to secure a social order for the promotion of welfare of the people. Article 39. Certain principles of policy to be followed by the state. Article 39A. Equal justice and free legal aid. Article 40. Organization of village panchayats. Article 41. Right to work, to education and to public assistance in certain cases. Article 42. Provision for just and humane conditions of work and maternity relief. Article 43. Living wage, etc. for workers. Article 43A. Participation of workers in management of industries. Article 43B. Promotion of cooperative societies. Article 44. Uniform Civil Code for the citizens. Article 45. Provision for early childhood care and education to children below the age of 6 years. Article 46. Promotion of educational and economic interest of scheduled caste, scheduled tribes and other weaker sections. Article 47. Duty of the state to raise the level of nutrition
and the standard of living and to improve public health. Article 48, Organization of Agriculture and Animal Husbandry. Article 41A, Protection and Improvement of Environment and Safeguarding of Forest and Wildlife. Article 49, Protection of Monuments and Places and Objects of National Importance. Article 50, Separation of Judiciary from Executive. Article 51, Promotion of International Peace and Security. Part 4 फंडामेंटल राइट्स से फंडामेंटल ड्यूटीज़ से डील करती है, विच इज़ कम्स अंडर आर्टिकल 51. फंडामेंटल ड्यूटीज़. आर्टिकल 51A, It shall be the duty of every citizen of India, Clause A, to abide the Constitution and respect its ideals and institution, the national flag and the national anthem. Clause B, to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom. Clause C, to uphold the protect the sovereignty, unity and integrity of India. Clause D, to defend the country and render national service when called upon to do so. Clause E, to promote harmony and the spirit of common brotherhood among all the people of India, transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities, to renounce practices derogatory to dignity of woman. Clause F, to value and preserve the rich heritage of our composite culture. Clause G, to protect and improve the natural environment including forest, lakes, rivers and wildlife, and to have compassion for living creatures. Article H, Clause H, to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform. Clause I, to safeguard public property and to abjure violence. Clause J, to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rise to higher levels of endeavor and achievement. आर्टिकल क्लॉज जे तक 44 अमेंडमेंट से आया है और जो के वाला ड्यूटीज़ है वो 82 अमेंडमेंट से आया है. तो अब देख लेते हैं के वाला अमेंडमेंट को. क्लॉज के, who is a parent or guardian to provide opportunities for education to his child, or the case may be ward between the age of 6 and 14.